Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akanksha Kumar, and joining me in the studio, I have my colleague Ashwini Kumar Singh. Both of us recently covered the protest organized in Delhi by the Aam Aadmi Party against the resignation of their leader Manish Sisodia, who, along with Satyendar Jain, have resigned on 28 February. Now that two cabinet ministers in the Delhi government have resigned from their posts, what does it mean for the party and how will it impact the governance in the capital city? इन सभी बातों पर अश्विनी से बात करेंगे। तो अश्विनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत रिपोर्टर्स बहुत विदाउट ऑर्डर्स में। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी बुलाने के लिए। Also joining us online is my colleague Shivnarayan Rajpurohit. Those very scenic frame that you see is somewhere in Uttarakhand. We will not disclose the exact location though. Hi Shiv, how have you been? I'm good. I'm good. How is the weather in Delhi? Here it's not that cold. Yeah, I thought it'd be snowing, but I'm disappointed. मार्च में बर्फ का मजा लेने जाओगे तो कहाँ से मिलेगा? So, Shiv has recently filed a detailed story looking at how the foreign correspondents in India have been reeling under pressure and duress under the current regime. And in fact, Shiv, while reading your story, I was reminded of this exchange at the Media Rumble last year during one of the sessions when a journalist and advisor to the government, Kanchan Gupta, was having this session with Rama Lakshmi on the how foreign media is dealing with pressure under this government. And Rama Lakshmi quite interestingly said that, she is with the print, but earlier she was with the Washington Post. And she recollected this incident that after 2014, when she visited, the offices of the government, the bureaucrats told her that they already knew her, they were aware of her work, and they in fact had a dossier, on on all journalists. Um, Hmm. and I think your story, which focuses on recent surveys done among these foreign correspondents in Delhi, does highlight some of those worst fears as to how freedom of press has been infringed to a large extent since the last 8-9 years. And that brings me to the first question, that there has been a concerted effort to restrict from reporting in Kashmir. How exactly is it a procedural, delay, or is it deliberate? Is it a deliberate attempt to restrain foreign press from reporting from the ground in Kashmir? See, before I wrote the story on how foreign correspondents are working uh, in India, there were instances. There was anecdotal evidence indicating that the government did not like some of the reportage of foreign press, be it during COVID when burning pyres were, I mean, the photos of burning pyres were published in foreign publications, or the issue of Tablighi Jamaat, or the coverage of farm protests. So these were some of the incidents where the government of India openly talked about how foreign correspondents have covered these issues, and saying that they had inherent bias against India. So when, like, after BBC surveys, the the BBC surveys were the trigger for us. So we wanted to look at how foreign correspondents, like, how would they react to BBC surveys. So then we stumbled upon three surveys that foreign correspondents undertook, Hmm. and those surveys remained private until we published these surveys.
So these surveys showed how they quantify, in fact, how many permits the government of India has given to foreign correspondent in restricted or protected areas, or like how the government is giving visas to foreign correspondents. Is the government discriminating against some of the foreign correspondents who have done negative stories? And the third point that we found in the survey, or we highlighted in our story also, how, I mean, if foreign correspondents are facing any backlash from the government immediately after they've done some sensitive stories. So these are the three things we covered. So these three things, I think, I mean, we were able to quantify, in a sense, when you have survey, there are so many numbers in the surveys also. So Hmm. we could show readers how the government is dealing with foreign correspondence, and what kind of threats, and the extent of threat that the foreign correspondents in India are facing. But what was the response like when they try and attempt to do a non-sensitive story? Because I think the idea is that nothing negative should be in the public domain. So, and like your story also establishes that these restrictions, even for states like Kashmir, came into existence before the abrogation of Article 317 2019. So even if we keep aside sensitive areas and stories emerging from there, what has been the response of the government like in dealing with foreign correspondents when it comes to going ahead with non-sensitive stories? Uh, I mean, I spoke with some 8 correspondents for this story. So they told me that I can only talk about the restricted and protected areas, how their access has been curtailed or access has been denied altogether. So the restricted and protected areas include Northeast, 8 states in Northeast, and Jammu Kashmir, Ladakh, and border areas in Rajasthan, Himachal, Uttarakhand, and Andamans, and one more, I think. So I can only talk about these areas because we focus only on this aspect when it comes to reporting from certain areas in India. So there were few instances where some journalists wanted to go to these areas only for tourism, not for reporting. So even then, some of them were denied the permission. Government feels that if they go for even for tourism, like under the garb of tourism, they might do some reporting. They might, uh, it could be against interests of India. One example that I gave in the story was of one journalist. He wanted to go to Sikkim to uh, cover a story on organic farming. Hmm. uh, Sikkim became, I think, 100% organic in 2016. So I think 2 years ago or maybe 1 year ago, he applied and he had to wait for 5 months to get the permit for such a simple story. So that shows how government is dealing with the foreign correspondence, uh, even on non-sensitive issues. अश्विनी, यहाँ पर आपको बीच में थोड़ा लाना चाहेंगे कि शिव के साथ जो बीबीसी के दफ्तर पे भी जी 2-3 दिन तक इनकम टैक्स का सर्वे चला था, उसको आप लोगों ने कवर किया था। अब जब मतलब सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरीके के इंटरनल सर्वे देखते हैं जो कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो अपना ग्रुप है उन्होंने किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप मीडिया पर भी नज़र बनाए रखते हैं और एक जो बहुत ही ऑफन कोटेड एनेक्डोट है वो ये है कि आई थिंक इट वाज न्यूयॉर्क टाइम्स या एक फॉरेन पब्लिकेशन था जिसने जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने एक कार्टून लगाया था कि मतलब बिकॉज ही हैड बिकम प्राइम मिनिस्टर एट सच एन ओल्ड एज कि उनको दिखाया था कि वो गाड़ी चलाते चलाते सो गए हैं। तो एक वो भी दौर था कि कार्टून के माध्यम से भी अगर एनडीए की सरकार थी तो उस पर तंज कसा जा सकता था। आज यहाँ पर उनको जाने से भी रोका जा रहा है। इतनी सेंसिटिव क्यों है ये सरकार अपनी छवि को लेकर? सो जैसा आपने कहा कि बीबीसी का जो रेड हुआ था यही एक ट्रिगर पॉइंट था इस स्टोरी को करने का भी, कि ये स्टोरी मतलब आई तभी दिमाग में कि हाँ इस टाइप की स्टोरी हो सकती है कि जो बाकी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट या फॉरेन मीडिया है वो कैसे डील कर रहे हैं गवर्नमेंट से।
तो जो बीबीसी पे रेड थी वो 3 दिनों तक चली, और उसके बाद गवर्नमेंट का एक अनऑफिशियल बोल सकते हैं या बाद में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि इरेगुलेटरीज पाई गई हैं बीबीसी के ऑफिस पे। हालांकि बीबीसी ने कहा कि उनको डायरेक्टली कोई इनकम टैक्स से नोटिस नहीं मिला है, जो भी मिला वो मीडिया के माध्यम से ही पता चला है। तो बीबीसी का मामला अभी चल रहा है, वो कह सकते हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री था, मतलब एक कारण लोग बताते हैं, इसलिए भी वो रेड हुआ। अब अगर हम आए फॉरेन करस्पॉन्डेंट पे, तो देखिए भारत में इस समय खासकर G20 भी हो रहा है। एक छवि भारत की बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो एज अकॉर्डिंग टू मोदी जी पहले नहीं थी, अब बन चुकी है। अब हम मानते हैं कि हम देश विश्व भर में लोग इंडिया को जानने लग गए, पहले वो नहीं होता था। तो अब जब ये इतनी बड़ी छवि बन गई है, अगर उसको कोई भी फॉरेन मीडिया क्रिटिक करेगा या उस पर सवाल उठाएगा, अगर मान लीजिए दिल्ली में दंगा हुआ और उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, अगर कोई फॉरेन मीडिया उस पर स्टोरी करेगा तो ऑब्वियसली है कि भारत सरकार का इमेज छवि खराब हो सकती है उससे। ये चीज़ें जो हैं वो उनके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट है। जम्मू कश्मीर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, लद्दाख नहीं जाने दिया जाता है, असम नहीं जाने दिया जाता है। तो जब हम मिलने भी गए थे, मैं भी गया था शिव के साथ, एक गवर्नमेंट की एम्प्लॉई, सीनियर एम्प्लॉई हैं कंचन गुप्ता, उन्होंने कहा कि ये सेंसिटिव इलाकेज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी रीज़न है, जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी रीज़न है, इसलिए हम इनको नहीं जाने दे सकते। तो देखिए उनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए वो गए और उन्होंने कोई स्टोरी कर दी, या उनको किसी ने हाईजैक कर लिया, उससे किसी कोई आतंकवादी ने उनको पकड़ लिया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत सरकार होगा। तो इसलिए हम इनको नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरी छवि ये भी है कि भारत सरकार इतना, आप बोल रही है ना, जैसे सेंसिटिव पहले हुआ करता था, पहले क्रिटिक्स भी लोग एक्सेप्ट कर लेते थे पॉलिटिशियंस, लेकिन अब वो शायद सेंसिटिविटी नहीं रही। इसीलिए आप देखेंगे कि आए दिन कहीं गुजरात में किसी के खिलाफ FIR होता है, कहीं राजस्थान में होता है, कहीं मध्य प्रदेश में होता है, कहीं अलग अलग प्रदेशों में होता है, क्योंकि शायद पॉलिटिशियंस अब वो आर्ट नहीं समझना चाहते हैं, या उनको लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल करेगा तो FIR करो, जेल भेजो, तभी समझ में आएगा। तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी इंटरनेशनल छवि को बचाने के लिए ये जो J वीज़ा पे रोक लगाना, जो IOC होल्डर्स हैं उनके ऊपर रोक लगाना, या उनको परमिशन नहीं देना वीज़ा के लिए कि आप जाके कोई स्टोरी कर पाओ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी छवि कहीं ख़राब हो सकती है इंटरनेशनल में। खासकर G20 आ रहा, तो शायद गवर्नमेंट और सजग हो गई है कि कुछ भी गलत ना हो, सब कुछ सही सही जाए। एक बात और जी एक जी मिनट शिव। इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि आपने पूछा कि गवर्नमेंट इतना सेंसिटिव क्यों है फॉरेन मीडिया को लेके, या फॉरेन रिपोर्टाज इन फॉरेन प्रेस। उसका एक कारण ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स, और गवर्नमेंट नाउ नोज दैट जितना भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है अभी इंडिया का, लाइक दे मैनेज्ड, quote unquote, they've been able to manage these, I mean, our domestic media houses to large extent. There are exceptions also, like in print maybe, बट अब उनका ये है कि नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लुक एट हाउ फॉरेन correspondents are working in India. तो like there are different methods you can come up, you can burden foreign correspondent with bureaucracy कि आपको इसके लिए परमिट चाहिए, 8 to 10 वीक एडवांस में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ओनली देन वी विल बी अलाउड। सो ये काफी अलग अलग मेथड्स है द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि कैसे उनका जो काम है फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स का, कैसे उनको रोका जाए, कैसे उनके लिए हर्डल्स बनाए जाएं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते रहेंगे परमिट्स के लिए, तो आप रिपोर्टिंग कब करेंगे? जैसे बोला जाता ना कि मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री तो हैं और रहेंगे भी, तो अब विदेश का इंटरनेशनल भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना कोई। इसलिए कि भारत का मीडिया सब सही हो गया है, फॉरेन मीडिया को भी कर दें तो विदेश के प्रधानमंत्री पूरे इंटरनेशनल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसमें एक जो मुझे और एग्जांपल ध्यान आता है वो है जब टाइम मैगजीन में आतिश तासीर ने एक नेगेटिव कवर स्टोरी करी थी डूइंग अ प्रोफाइल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, and soon after the story was published, again like the government literally just went after him. His visa was revoked, and like he also I think gave his Indian citizenship, and said that I'm also no longer keen to be a part of this country. I no longer identify with. इसमें एक जब जो चीज़ है जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ शिव और अश्विनी की, जैसे आपकी स्टोरी कहती है और ये बात जो गवर्नमेंट एडवाइज़र हैं कंचन गुप्ता, जो कि खुद भी पत्रकार रह चुके हैं, उन्होंने भी मीडिया रंबल में भी लास्ट ईयर ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि इस सरकार में पत्रकारों को लेकर कोई तिरस्कार की भावना है। एंड एज योर स्टोरी ऑल्सो
mentions the fact that he himself has been at the helm of organizing certain Ask Me Anything sessions between Hmm. union ministers, let's say Anurag Thakur, and foreign correspondents. Uh, so they are also trying to reach out as well as trying to restrict them from reporting anything that can tarnish the image of the government. Uh, why then trying to reach out to them? Is this like part of their political ploy because they have to balance it out? How do you see it? हम्म एक तो ऐसा है कि कंचन गुप्ता जी ने बताया था हमें कि व्हेन वी मेट हिम, उन्होंने एक ये मीडिया रंबल का जो सेशन है दैट यू आर रिफरिंग टू, ही आल्सो रिफर्ड टू द सेम सेशन वेयर Washington Post South Asia bureau chief, he said that he agreed, in fact, saying that the foreign press has general slant towards negative stories in India. तो उन्होंने खुद ने अग्री किया है कि थोड़ा सा slant होता है, and it is because ideological differences that foreign press has with the with the current government. तो ये भी है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हुए हैं जो राइट विंग गवर्नमेंट है इंडिया में, और जो मे बी लेफ्ट विंग पब्लिकेशंस हैं इन 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 अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो वो भी एक क्लैश बनता है कि आपके आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स यू लुक एट सर्टेन स्टोरीज विद सर्टेन पर्सपेक्टिव्स। तो है कि वो एक एम्यूनिशन है फॉर गवर्नमेंट, इट गिव्स एम्यूनिशन टू गवर्नमेंट in saying that foreign press is inclined to do negative stories against India. One example that Kanchan Gupta gave during our interaction, he said one of the sessions that he organized between the ministry and foreign press was on oil imports in the wake of Russia-Ukraine war. तो फॉरेन में काफी प्रेस में आया था कि इंडिया हैज इंक्रीज इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बिकॉज it's buying it cheap. तो फिर like then of course then one session was held with the petroleum minister where the data was given to foreign correspondents. If you compare our imports with the Europe's imports from Russia, like it's nothing. So I think the government is also trying um, uh, to ensure that there is, I mean, the reportage should be factual. But uh, even after the interaction with the foreign correspondents, Kanchan Gupta claimed that 5 or 7 days after that session, foreign publications kept doing what they want to do, like regardless of our position. Our position was not given enough space in the reports on India's oil imports from Russia. तो अश्विनी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या एक वो स्पेस बनाने की ये कोशिश है कि कम से कम अगर आप कुछ नेगेटिव चला भी रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अगर देने की ज़रूरत पड़े तो वो रास्ता कम से कम खुला रहना चाहिए? जब काफ़ी बातचीत हुई रिपोर्ट को लेकर जब शिव के साथ, तो एक ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की फॉरेन मीडिया के साथ रिलेशन सही करने की, उनको काफ़ी मौके दिए रीच आउट करने के लिए, लेकिन वो नहीं लिखते, अभी भी नेगेटिव स्टोरीज आती हैं। तो उनका ये कहना था कि नेवर ट्रस्ट ऑन फॉरेन मीडिया, मतलब आप कितना भी उनको मौके देंगे लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव अगर लिखना है तो लिखेंगे ही, वो कुछ बदल नहीं सकता। But another grouse that foreign correspondents have, apart from these informal interaction that the government has held, um, उसमें एक grouse ये भी है कि there is a very tiny pool of ministers or officials who are available for comment if foreign correspondents are doing any story. So suppose if one is doing story on environment, um, uh, a negative story, let's say for example, so the foreign correspondents will have hard time in reaching out, maybe environment secretary or the environment minister to get quotes. So they are saying that very tiny pool, very selected ministers are available for comment, but rest of them are not available for comment when we are doing negative stories. आकांक्षा जी, सिर्फ ये फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स के साथ नहीं, हम लोग साथ हाँ, भी मैं यही वही है। कहने हाँ, वाली मतलब थी कि वो। ऐसा कोई हाँ। डिफरेंस नहीं उनके और हमारे साथ। अगर आज आप कोई स्टोरी कर रही हैं, अगर आपको किसी भी मिनिस्ट्री से जवाब चाहिए तो सीधे मिनिस्ट्री में कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। अगर लैंडलाइन नंबर है, फ़ोन नहीं उठाएगा, और उठाएगा भी तो बोलेगा पीआईबी जाओ। पीआईबी में अगर आपने बोला कि भाई मुझे ये जानकारी चाहिए, तो पीआईबी वाला बोलेगा आप मेल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद वो क्वेश्चन भेजता मिनिस्ट्री, वहाँ से कभी रिप्लाई नहीं आता। मैं रिसेंटली
एक पीआईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर उनसे मिलने गया था। मैंने कहा कि आप लोग तो मुझे कभी जवाब ही नहीं देते। तो बोले वो चैनल ही बना हुआ है इसलिए कि हम सवाल लेते हैं, वहाँ भेजते हैं, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता। ये हर मिनिस्ट्री की कहानी है। जवाब सिर्फ उसी में आता है जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ठीक है ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो रिलीज कर दो। अदरवाइज कोई भी, अगर आपने कोई स्टोरी की है क्रिटिकल टू गवर्नमेंट, उसका जवाब कभी नहीं आता। तो Right. हमारे और फॉरेन करस्पॉन्डेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एक ही जगह है हम लोग भी। अभी तो ऐसा है कि लाइक इवन इवन इफ यू वांट टू गो टू गवर्नमेंट ऑफिस, be it ministry or even DDA. I was doing story on Mehroli demolition. Like until 6 months ago, it was okay for correspondents, for reporters to go inside without an appointment. But now you need to have an appointment, prior appointment, and without appointment you cannot enter the building, even if you are a correspondent. And no official wants to meet a reporter who is doing a negative story uh, against DDA. So the sources of, I mean, the access, I mean, journalists' access to sources has been curtailed to such an extent that journalists are forced to, like, I mean, the stories, उसमें एक एक होता है कि आपके पास, like, you don't have reaction from all parties which are part of your story. So it, in one way, you also don't know what, how government thinks on a certain, on one story, how government reacts. Like, we might be wrong for some story, but unless government speaks, unless government is open to talking to journalists, I think this is not bad for journalism, and this is, I mean, this is very bad for journalism and for us also as democracy. Yeah, I mean, at least in UP, on a lighter note, there is a response mechanism. The government sends you notices and files FIRs against journalists. That's So how I think that's how that's one way to react. So, on that note, the video part of this podcast ends here. To listen to the complete podcast, log on to newslaundry.com. The subscription model is something that keeps Newslaundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to Newslaundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।